बदतमीजी देख के मेरा मूड ऑफ हो गया. Do it. Satisfaction. I have a bad news to share with you guys. इतना रोई हूँ. I am back from my travel. So people who haven't watched my travel vlog, you can definitely check it out. I have already, mentioned the link in the description. But yeah, I am back and I was sick for 2 freaking days. It was a Monday and today is a Tuesday. So basically 2 days ago. So Sunday से actually I felt a little bit uneasy. मुझे थोड़ा nauseatic लग रहा था, but I ignored it, considering it to be, heat stroke or something. तो मैंने इग्नोर किया, मैंने टाइमली मेडिसिन नहीं लिया और मैं कल पूरी बीमार थी. आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप एंड पूरे दिन सोई थी. सो टुडे आई वॉज एबल टू डू समथिंग. आज थोड़ी बहुत जाना ही है. माई कलर ऑल्सो लुक लिटिल बिट डाउन एज वेल. एनीवेज, ट्रैवल से आने के बाद द टफेस्ट टास्क फॉर मी इज़ टू क्लियर आउट द बैग विच आई हैवंट डन इट ऑफ कोर्स, एंड आज होगा भी नहीं मेरे से. सेकेंड थिंग इज़ एडिटिंग द ह्यूज वीडियो. आई हैव अ क्लिप ऑफ 1.5 आवर्स का एंड मैंने एडिटिंग चालू भी नहीं किया है. मेरा प्लान था टू डू इट ऑन अ संडे, बट आई डिड नॉट फेल्ट लाइक डूइंग एनीथिंग दैट डे. आई वॉज टू टायर्ड. एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडिटिंग. दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है ये दिस डैम थिंग. अब मैं ये खाली करूँ कि एडिट करूँ. ऑल्दो मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी, बट ये बदतमीज़ी देख के मेरा मूड ऑफ हो गया. अब मुझे बहुत मेहनत करके 3 घंटे लगा के इसको खाली करना पड़ेगा. भरा भी मैंने, ये तो खाली भी मैं ही करूँगी. I am just out to show you beautiful pink sky, like literal the pink hue you can see. It's looking so pretty. How much pink is too much pink? So pretty. But I am kind of loving the feeling. It's beautiful and at the same time it's making my skin look so nice. So pretty. Let's edit it. Today I was successful in doing a little bit of editing. तो मैं अपने इस to do list से at least edit vlog वाला option will definitely delete. Let me do it. Satisfaction. It's already 11:30 PM and मेरा कल ऑफिस है, so सुबह उठना है. I have a bad news to share with you guys. सो मेरे पास एक अच्छा सा ईयरफोन था, ईयरबड्स बेसिकली. एक वो गिर गया और मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ चले गया. एंड आई वॉज लाइक फिगरिंग इट आउट, क्योंकि नीचे भी देखा मिल नहीं रहा है. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी कीमी ढूंढ के लाएगी. 4 days और 5 days लेटर, और मे बी नॉट 5 days, मोर देन दैट, 7 दिन बाद कीमी ने ढूंढा तो सही, उसने अपना काम ज़रूर किया, बट 3000 का चूरा लगा है मुझे. Update. It's my first day and I am half dead and I haven't vlogged for 2 days. तो मेरा first day of course नहीं था. It started yesterday, like midnight, let's say Saturday basically. To make myself feel a bit cozy, I switched on this lamp और I'm doing crocheting and watching a crochet video. So just cozy Saturday, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होने की संभावना है. एंड नीचे आई गेस इन्वर्टर इज़ गेटिंग फिक्स्ड, तो इसलिए ड्रिलिंग साउंड यू माइट बी गेटिंग. सो दिस इज़ द होल अपडेट. या सो आई विल जस्ट कंटिन्यू द crochet. Myself more, I decided to appear for. It's not happening anytime soon. I'm just happy to share things with you guys. That is, I have completed my scheduled shoots on time, and it's gonna be uploaded on time. Hopefully, time. Hopefully, I am super happy today. Yay!
आई वॉज फीलिंग लाइक कि कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में, आगे ही नहीं बढ़ रही गति. बट आफ्टर डूइंग दिस आई एम फीलिंग अ बिट productive. Yes, the day is ending well. I got your package. मैंने शायद क्लीनर मंगाया था, स्क्रीन क्लीनर. Let's open it and check. This much of gesso cost me around 200 rupees शायद. हाँ 199 का तो जेसो ही आया है. And that to this much. I have to cover the whole canvas. Okay. This much of gesso I have. And I have ordered this cleaner. इसके लिए excited हूँ, पता नहीं क्यों. Maybe I'm getting old because it's exciting to keep your gadgets clean all the time. And I was looking for a good screen cleaner. यूज़ करने के बाद पता चलेगा how effective it is. Oh, that's nice. They have given a cloth. Packaging is nice. तभी this costed me good amount. Like the cleaner costs 500 or something. I know it's costly. But yeah, the cloth is so nice. So nice kapda. And it's huge. Nice. इसके साथ I have got this screen cleaner spray will last me 2 साल आराम से, easily 2 years. But the thing is that I am excited to use it. Maybe I should use it on my phone. Yeah. अरे यार close दिख रहा होगा गंदा थोड़ा थोड़ा. हाँ, see, I have finger prints in here. Ooh. Okay. Wow, so easy to clean. देखो. Wow. पूरा साफ हो गया. कि आज इसने मुझे लिटरली ट्रॉमेटाइज किया है. खुद तो लड़ झगड़ के आ गई है. नाउ आई एम स्केर्ड कि समथिंग बैड. इसको वेट के पास लेके जाना पड़ेगा. एनी हाउ, बिकॉज शी वॉज ऑलमोस्ट गायब फॉर 1.5 hours. रो रो के आंसू बहा दी. उसके बाद जाके लड़की मिली मेरे को. मैं इतना रोई हूँ. आई वॉज अबाउट टू मेक अ पोस्टर फॉर हर कि शी इज़ लॉस्ट. बजरंग बली थे, गणेश जी थे, इसलिए इसको घर के पास भेज दिया. वरना टुडे आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स. आई वॉज अबाउट टू लूज ऑल द होप्स. फिर मिल गई है. आई हैव टेकन अ बाथ. Now I'm gonna do a little bit of skincare because my skin needs a lot of care. So I'll be doing that. I have done my mini laundry, which was, kept for a long time. So I did that. Right now, I'll do my skincare and sit for work. Yes, I'm gonna take Kimi out for a walk abhi. It's currently evening. How this will help me? Basically, if I take her on a walk, I have to run with her because she's hyperactive dog. She's 5 years old, guys, but she's hyperactive dog because of the fact that she's street plus lab, like indie plus lab. So she's a mixed breed dog, hence extreme energy, extremely active with the things. That's why she has the tendency to, get away from home all the time. She just likes to run away. But I have decided that I'll make her run like crazy. So this will help me in a way that I'll also lose some sort of calories. I'll be, doing some activity, and it will literally push me to dress up properly because lately I have been dressing up like a slob, like almost every day, night suit, nothing else. Because it's a work from home, so I don't get motivated enough to wear formals, look proper, because there is no scope of going out or something like that. I'm just sitting in front of the screen.
So yeah, this will help me in a way. It might help me to do well mentally, because lately I have been very lazy with the things. I have been procrastinating. I have been feeling like emotionally very imbalanced. So might help. It's safe to say that I'll be ending my vlog right here. I'm so sorry that today's vlog is not gonna be that, big. But I'll make sure that from next videos I'll be bringing a lot of content, a lot of ideas to you guys. Thanks for supporting. It means the world to me. And yes, I'll meet you really soon with the next vlog. Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe.